Assalamu alaikum. Here we are with Zilka's favorite channel. Hope you all are doing very well. So welcome to parts of speech. We have done already the nouns and the types of the nouns, pronouns, and we are working at adjectives, and today we will discuss the forms of adjectives. Okay, so before starting, subscribe the channel and hit the bell icon so you can get the future videos also. To discuss the degrees of comparison, as they are three: positive degree, comparative degree, and superlative degree. Let's discuss them one by one. So positive degree is a term that relates to adjective and adverb. An adjective or adverb that does not make a comparison is said to be in the positive degree. It means in positive degree there is no comparison between nouns or pronouns. It is just using normally for a noun or a pronoun to show its quality. For example, my grandmother is a tall lady. She has a pretty doll. Here it is defining the quality of a lady, that she is tall, and defining the quality of a doll, that she is pretty. There is no comparison between the nouns. But in comparative degree, there is a comparison between two objects, between two nouns, between two pronouns. How to write it? First we will write the noun, that is a subject, then verb, then comparative adjective, that is second degree of adjective, then we will write than, and then the noun, that is the object. For example, my house is bigger than yours. Here we are comparing my house and yours, so we will use the second form of adjective, that is bigger, not big. Okay, and your grade is higher than mine. Here we are comparing mine and your grade, so we will write higher, not high. And remember that comparative degree is always followed by than. Okay, after using the comparative degree, we will write than. Okay, now superlative degree. In superlative degree, we will compare the noun or pronoun with more than two nouns or with all nouns. To write, the pattern is noun, then verb, then the. Then superlative degree, that is the third form of the adjective, and then noun, that is the object. For example, my house is the biggest in the town. Here biggest is the third form of adjective, that is superlative form, and highest is the third form of adjective, that is superlative form, and it is followed by the. So we will use the before superlative degree, right? So here are some rules to follow to know how to use the degrees of comparison. The first rule is we can use positive form to comparison by using as adjective, as, like Minnie is as wise as Neiman. Okay, in this way we can also use adjective, the first form, the positive form. An adjective is comparative degree are usually followed by than. Okay, so here we are using than. They are telling that than, we always use than after the comparative degree of adjective. Like after more diligent, we will use than in comparative degree. Okay, use the before superlative degree of adjective. She is the best student in their class. So before best we will write the, because before superlative degree we will use the. She is the biggest girl. Here what they are saying, that after superlative degree, mostly we use of or in. It is usually, it is not like always. She is the biggest girl in this school. Study is the most important thing of my life. Okay, so the last rule is that we cannot use double comparatives or superlative. It means that it is more darker. Here we are using two comparatives. How? Darker is comparative. Okay, the dark is actually the positive form, and when we add er, darker, that is comparative. Then we cannot use more with it. More is another form of comparative degree. Okay, so we will use just darker. So remember guys that in comparative degree we used to add er before er after the form of
after the positive form of adjective, or we will add more to make the comparative degree. Look here, we have some examples. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Black, blacker, blackest. Or if we have y at the end of adjective like dirty, we will drop y and add ier, dirtier, to make comparative, and dirtiest, iest, to make superlative. So remember, we use to add er or ier or more to make comparative degree, and we used to add est or iest or the most to make superlative degree. If you understand, you can easily solve the online quiz. That is very interesting game. After solving it, take a picture, take a click, and you have to send to me by posting, by submitting in Google Classroom. Join the Google Classroom with this code. You will get the feedback. To understand better, I will explain it in Urdu also. So adjective की 3 forms हैं, 3 degrees हैं. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जिनको के पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है. पॉजिटिव डिग्री में नॉर्मल एडजेक्टिव यूज़ होता है जो कि क्वालिटी है किसी नाउन और प्रोनाउन की. जैसा कि ग्रैंड मदर इज़ अ टॉल लेडी, शी हैज़ अ प्रिटी डॉल. अब ग्रैंड मदर की तारीफ़ की जा रही है कि वो टॉल लेडी हैं और डॉल की तारीफ हो रही है कि वो है प्रीति. यहाँ पर किसी भी, यहाँ से जस्ट एक नाउन का जिक्र हो रहा है, 2 नाउन्स को कंपेयर नहीं किया जा रहा, कोई मुकाबला नहीं है. जबकि कंपैरेटिव डिग्री में 2 नाउन्स का, 2 ऑब्जेक्ट्स का, 2 प्रोनाउंस का मुकाबला होता है. उसको लिखने का तरीका है, पहले नाउन सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब, फिर कंपैरेटिव एडजेक्टिव जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, उसके बाद दैन, और फिर नाउन जो कि ऑब्जेक्ट. जैसे कि माई हाउस इज़ बिगर दैन योर्स, जहाँ पे माई हाउस और योर्स इन दोनों का हो रहा है कंपैरिजन, मुकाबला. तो इसके लिए हमने सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यूज़ की जो कि बिगर है. यहाँ पे हमने हायर यूज़ किया, ओके. और इसके बाद हम लिखेंगे दैन, जैसा कि रूल्स में हमने पढ़ा. तो सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव यानी कंपैरेटिव डिग्री के बाद दैन यूज़ होता है. सुपरलेटिव डिग्री में नाउन को कंपेयर किया जाता है 2 से ज़्यादा नाउन्स के साथ या फिर सारे नाउन्स के साथ. लिखने का तरीका, नाउन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस द प्लस सुपरलेटिव एडजेक्टिव जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव है, और फिर प्लस नाउन जो कि ऑब्जेक्ट है. जैसे कि माई हाउस इज़ द बिगेस्ट इन द टाउन. अब मेरे हाउस का मुकाबला हो रहा है पूरे टाउन के हाउसेस के साथ. इसके लिए यूज़ होगी सुपरलेटिव डिग्री, और उससे पहले आएगा द. योर ग्रेड इज़ द हाईएस्ट इन द क्लास. मेरे ग्रेड का कंपैरिजन हो रहा है पूरी क्लास के साथ, तो इसमें यूज़ होगा थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव फॉर्म, दैट इज़ हाईएस्ट, और उससे पहले यूज़ होगा द. तो रूल्स को याद रखें कि एडजेक्टिव नॉर्मल फॉर्म में, पॉजिटिव फॉर्म में हम एज वाइज एज भी यूज़ कर सकते हैं. कंपैरेटिव डिग्री में एडजेक्टिव के बाद, सेकंड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के बाद दैन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में थर्ड फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव के से पहले द आता है, राइट. और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्टली सुपरलेटिव डिग्री के बाद इन या ऑफ यूज़ होता है. अगर हम एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को डबल यूज़ करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. जैसे कि कंपैरेटिव मोर से भी बनता है और ER लगाने से भी, तो उन दोनों में से हम एक को यूज़ करेंगे, दोनों को कंबाइन यूज़ नहीं कर सकते. यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव्स की आपको फॉर्म्स दी गई हैं. ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट. और अगर लाइक डर्टी जिसमें वाई यूज़ हो रहा है एंड में, वाई को ड्रॉप करके IER ऐड करेंगे, डर्टियर कंपैरेटिव बन जाएगा, और IEST यूज़ करेंगे तो सुपरलेटिव बन जाएगा. तो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम ऐड करते हैं ER और IER और मोर, और सुपरलेटिव बनाने के लिए EST, IEST और मोस्ट.
तो ऑनलाइन क्विज को सॉल्व करके अटैच करें। आज तक के लिए इतना बहुत, इजाज़त दीजिए।